Okay, so previously हमें lecture number 1 रे already discussion करले introduction to your electric circuit. In that we have discussed these topics, different parameters, definition for current, voltage, power, energy, and their formulas, and electric circuit terminology like your node and branch से विषय पढ़ितले. So in so एटा तमरा सेकंड लेक्चर जोड़ा कि एक्चुअली कंटिन्यू फर्स्ट लेक्चर रो कंटिन्यू हमें रखिबा एटा कवर है नतला प्रीवियसली. सो सर्किट लॉस इन केवीएल केसीएल पढ़िबा and will solve the problems in this class. Okay, so learning objectives रे भी हमरा बहुत सारा ऑलरेडी किछि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फिल अप हो जाइतला जिन के एटा डेफिनेशन करंट एटा फर्स्ट टाइम ऑलरेडी बुझिया रिसर्च सेकंड टाइम भी ऑलरेडी हमें कवर करले जोटा कि नोड्स ब्रांच लूप विषय डिस्कशन करचे एंड हमें नेक्स्ट आउ जे दीडा अछि आज आज हमें एटा डिस्कशन करिया. ओम्स लॉ ऑलरेडी डिस्कशन कराई जाय छै. केवीएल एंड केसीएल विल सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम. Also series and parallel circuit विषय भी हमें एनालिसिस करथिले प्रीवियसली. सो जदि प्रीवियस क्लास अटेंड करने कहले भी मो सेटा ऑलरेडी YouTube रे अपलोड कर दिछि देखि परियो सेटा. ए सब हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले. ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट्स टर्मिनोलॉजी. Okay, then Kirchhoff's law. Kirchhoff's having two laws. One is your KCL, Kirchhoff's current law, and second law is called KVL, Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's law used to analyze different circuits. Circuit रा बहुत सारा जो parameters अच्छी like voltage, current, power ये सब easily calculate करी पारिबा by using this law. ना एरा यूज करी हमें different value सब easily बाहर करी पारिबा. So Kirchhoff's first law जोड़ा कि तमरा KCL Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law होची KCL, Kirchhoff's current law. So Kirchhoff's current law KCL states that in a network, okay, with a network रे the algebraic sum of the algebraic sum of all the currents, the algebraic sum of all the currents meeting at a node or junction or a point is 0. So mathematically we can write down that is the algebraic sum of summation value of ik where value of k equal to 1 to n is equal to 0. So a equation ला कौन बुझाउची algebraic sum of all the currents सब जा current रा meeting at a point is 0. Right? So easily I made a बुझी पारिया with simple example or simple उडे तमरा diagram through रे हमें easily एटा बुझी पारिया. So simple उडे node अछि बा उडे point अछि, simple उडे node बा point अछि. So some currents are entering, किछि current मनरे enter करछि and किछि current leaving कर. Suppose तीनटा current मोडे दे चारटा बा पांचटा हमें current रा direction देचे current नेचे and तारा different direction में नबा. Suppose current अछि उडे I1 current is entering to this node. Suppose this is node बा point कया node or junction or point. So a node को तमरा current उडा different आसुची जिनके I1 is incoming current and I2 is also incoming current and I3 is also incoming current while I4 and I5 are outgoing current. So I4 and I5 को हमें
outgoing current हिसाब रे नै so I1 I2 I3 are incoming current and I4 and I5 are outgoing current. So clearly definition कौन कहूँ ना algebraic sum of all the currents meeting at a node or junction is 0. All the currents meaning there may be some currents which are entering किछि currents enter करछि आउ किछि current बाहर जाउछि लिविंग करछि एंटरिंग करंट एंड लिविंग करंट और हम कहबा इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट सो तार जदि हमें सम करबा अलजेब्रिक सम करिया देन दैट इज इक्वल टू 0 आसीबो सो ए जो इक्वेशन डा ऑलरेडी लिखा छि वेयर k इक्वल टू 1 टू n k इक्वल टू 1 टू n माने i k रे वैल्यू 1 2 3 सो i1 i2 i3 ए सब जगह सम अलजेब्रिक सम करिया गले 0 आसीबो सो normally sum कहले हमें normally addition कर दबा that is i1 plus i2 plus i3 एबा addition कले हे जियो तमर कोन ना sum algebraic sum रे मीनिंग कोन algebraic sum रे मीनिंग होची sum करबा बट तार करंट रो डायरेक्शन भी हम सेडी assume करबा और गिवन जोड़ा दे सकतो हमें कंसीडर करबा देन सेटा हमें algebraic sum कहबा सो इन दिस केस ए जे हमर जो डायग्राम हमें नै छै i1 i2 i3 i4 i5 पांचटा नै छै एटा इजीली हम इक्वेशन लिख पारे फ्रॉम KCL I1 plus I2 plus I3 ओके सो हमें ओडा एज्यूम करिया पड़िबे एडी जे इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव ऑल द इनकमिंग करंट्स आर और एंटरिंग करंट्स आर पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट्स और लीविंग करंट्स जो करंट जाउची बाहर को दोज आर योर outgoing currents by negative नहीं पारिया minus negative sign okay so positive and negative incoming current उडा positive and outgoing current उडा हमें negative assume करबा reverse assume कला भी हबो outgoing current को positive incoming current को negative नले भी हे पारियो I1 plus I2 plus I3 now I4 and I5 are outgoing current so sum of the negative currents outgoing current negative उडा बाहर जाउ से मो नेगेटिव नै छी and minus 5 equal to 0 so एडा होचे algebraic sum so एडी क्लियरली देखि पल्ला जेतु I1 I2 I3 are incoming currents are positive निया छी while I4 and I5 are negative निया छी काइना एडा outgoing current but देखि परिबो एडा को सब sum ही करे सबडा मिसाई छी so that is why it is called algebraic sum so this is equal to 0 further जदि हमें simplify करिबा so these are incoming current I1 plus I2 plus I3 which is equal to I4 and I5 जदि हमें बाहर कर देबा राइट साइड को शिफ्ट कर देबा then I4 I5 will be positive so I1 plus I2 plus I3 equal to I4 plus I5 it means that the sum of the incoming current equal to sum of the outgoing current these are your incoming current I1 I2 I3 and I4 I5 are outgoing current so sum of the incoming current equal to sum of the outgoing current एटा थला KCL Kirchhoff's current law so exam रे maybe explain KVL and KCL 5 marks हो नले individual KCL बा KVL 2 marks रे exam रे आसी पारे so then हम देखिबा KVL Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's voltage law is the second law similar to your first law Kirchhoff's voltage law implies that it states that algebraic sum of all the algebraic sum of okay algebraic sum of all the voltages algebraic sum of all the voltages in a closed loop is 0 so algebraic sum of all the voltages means the voltage source that is the EMF electromotive force बा source voltage जुड़ा को जहाँ circuit रे connect हेतियो voltage source plus
the voltage drop I into R. I into R होची voltage drop. Ohm's law आम ऑलरेडी पढ़ी जदि रेजिस्टर R अच्छे एंड से जदि करंट फ्लो हम देन वोल्टेज किसी ड्रॉप हम दैट इज I into R. कैपिटल R भी नहीं परिया नो प्रॉब्लम. So this is equal to 0 आसी बोली. So sum कर देबा all the EMF loss IR drop equal to 0 आसी. So simple circuit नहीं इसला हमें properly analysis करी परिवा. Suppose गोटे छोट सर्किट एगुड़ा देछि. So different values उड़ा मन एगुड़ा किछ अछि. Okay. So our value उड़ा हो suppose माने parameters बा value उड़ा हो this V1 R1 V2 V3 and up to and up to R1 up to. So एगुड़ा को जो बड़ टर्मिनल डा हमर पॉजिटिव. This is positive negative positive negative negative एटा पॉजिटिव. जोड़ा बड़ टर्मिनल डा पॉजिटिव. ओके बैटरी तो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े छी बैटरी विषय में कहि छी. सो पॉजिटिव नेगेटिव एटा अछि बैटरी उडे बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव. बड़ टर्मिनल डा पॉजिटिव छोटडा नेगेटिव हमर अछि. सो ए जगह में इक्वेशन यूज करि परिबा. इक्वेशन जदि यूज करिया कोडा अलजेब्रा सम करबा वोल्टेज डा को जीरो कर दबा. सो एडी ओडा हमें करंट रो डायरेक्शन नबा आई वाली नबा मनरो क्लॉकवाइज हो न एंटी क्लॉकवाइज हो जोगला डायरेक्शन भी नहीं परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं. जितला हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करबा इन दैट केस ए जो कांसेप्ट डा को प्रॉपर्ली आउरी क्लियर हे जीवो. फॉर नाउ देखो एडी इक्वेशन हमें कोडा लिखिबा. सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी point A to B, B to C, C to D, D to again A. गोटे complete loop बा close loop जदि हमें कहबा starting from point A to B को जीवा, B रू C को, C रू D को, again जतरो D रू A को जीवा, then only गोटे close हबो. So गोटे close loop रे सब जगह voltage तमे जदि calculate करबो that is equal to 0 आसीबो. So सेटा हमें लिखि परिबा 0 ली. So it देखो from point A to point B जितने गला एडो B रू देखो point B रो एडा जो A to B को जितने में गले पॉजिटिव रू बाहर ची. सो पॉजिटिव रू बाहर पॉजिटिव नवा. सो V1 is positive minus voltage drop in resistor R1. R1 रे voltage drop केते हबो I into R1 I into R1. Similarly R2 रे voltage drop केते हबो R2 रे voltage drop हबो I into R2. करंट केते सेम करंट आएगा थ्रू आउट द सर्किट जेते गुडे कंप्लीट लूप अछि गुटे लूप अछि. सो सेडी करंट तो सेम ही रहबो. I into R2 होची वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर R2. सो V1 माइनस I into R1. वोल्टेज ड्रॉप गुडा को सब हमें नेगेटिव हमें कंसीडर करबा कोन ना नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप जागो नेगेटिव. देन एट देखि परिया V2 हमें कोड बाहर छे नेगेटिव बाहर छे. सो माइनस V2. Similarly, you can see that as a V through हमें चलो भाले C to D को जितना में गले C रू D को जितना में जाऊ जे V3 देखि परिया पॉजिटिव बाहर छे. सो V3 is positive. So plus V3 minus voltage drop. This is the voltage drop I into R2. So minus I into R2 equal to 0. बुझिला. So this is the equation. So जतरो numerical question solution करबा then आउरी क्लियर है जीवो एडा कांसेप्ट ता. So एडी हम कहि परिबा V1 minus V2 plus V3 equal to ए जो ड्रॉप जगह हम यदि राइट साइड को नहीं जीवा I into R1 plus I into R2 है जीवो. that means कौन कहूची ना जहाँ तमे सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करछो से सप्लाई वोल्टेज जहाँ भी बैटरी हो नल तमे जहाँ सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करछो से वोल्टेज उडा को यूज पड़ियाबो रेजिस्टर यूज हेबो. जहाँ भी वोल्टेज देलो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव डायरेक्शन रे देलो पॉजिटिव डायरेक्शन रे बा नेगेटिव डायरेक्शन रे जहाँ भी तमे सर्किट रे अप्लाई करलो से वोल्टेज उडा को यूज हे जिवो कुडी ना रेजिस्टर रे वोल्टेज ड्रॉप हे जिवो. जहाँ देलो सेटा ड्रॉप होबो इक्वल होबो सेटा. सो जदी इक्वल हेला ताको हमें सब सम करदा कहले 0 हे जो ना नहीं जेती देलो सेती यूज हेला माने टोटल रे कोन 0 हेला. ओके. सो नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो किछि क्वेश्चन उडा को हमें सॉल्यूशन करबा.
So question number 1, an electric iron carrying 2 ampere at 120 voltage, find resistance of the device. So previously Ohm's law ame learn करचे already जे V equal to I into R. So V equal to the I into R अब question से पचाचे resistance पचाचे. So resistance R equal to V by I लिख परिबा. So this is equal to V केते 120 voltage 120, I केते 2 ampere. So 120 by 2 equal to 2 रे काटले एटा केते 60 ohm is the answer. So easy question. छोटो क्वेश्चन टा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The essential component of a toaster is an electric element, a resistor. गोटे टोस्टर देखियो जो ब्रेड को टोस्ट करा होची देखियो. ब्रेड को जो गरम करा ने ब्रेड को पूरा टोस्टिंग करा होची टोस्टर सेला. So सेटा रेजिस्टर टा गोटे रेजिस्टर बॉक्स that converts electrical energy to heat energy. So obviously सेटा electrical energy रो heat energy के convert करिवो. So question 50 छे, how much current is drawn by a toaster with resistance 12 ohm at 110 voltage. So current 50, current formula I equal to V by R. So voltage केते 110 110 by resistance केते 12. So this is equal to 110 by 12 equal to cancellation कले केते आसीबो 2 5 ओके 2 55 by 2 रे केते 55 by 6 ampere. So 55 by 6 यदि ampere हमें यूज करिया कैलकुलेटर भी यूज करि परिबा. So कैलकुलेटर हमें यूज कले आसी हमर आंसर 9.16. So 9.166 ampere. Okay, then हमें सॉल्व करिया क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहछि, find the equivalent resistance of the network. Find the equivalent resistance of the network between A and B of the following circuit. Following circuit उडा छी A और B भितरे तमरा total resistance पचा छी. So आपको सबले such type of question को सबले try करिवो solve करिया पय from this direction. ए डायरेक्शन रो तमे ट्राई करिवो सॉल्यूशन करिया पय इजीली सॉल्यूशन करि परिवो. सो मु जेतो सीरीज पैरेलल सर्किट पढैतले प्रीवियस क्लास रे. सो क्लियरली कहि छी जे जदि करंट चेंज होउनी, if current does not change, that is series connection. If current changes, then it is a parallel connection. So एबे ऑलरेडी को हमें इजीली सॉल्यूशन करि परिबा, बट तम गोटे करंट डायरेक्शन बुझौची सो दैट तमे आकु बेस करी आउरी बहुत सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्यूशन करि परिबो. नाउ पर्पस इज A to B देची A and B. So current will flow from A to B. A रू करंट एंटर करिबो, B रे करंट लीविंग करिबो. जहा करंट एंटर करिबो सेती करंट ही आउटपुट रे आसीबो. So when suppose for example I is a current entering up to this point, same current I will edi I asiba from this point. Suppose this point is point C. Okay, suppose point C. In point C रे देखियो current divides. So some currents here किछि करंट एपडा आसीबा आ किछि करंट जो 8 ओम अछि एपडे किछि करंट आसीबो राइट. So 8 ohm पटे जो current asla, say current again in this point, a point, suppose this point is D, at point D, it again changes, divides. किछि करंट आसीबो a path रे आउ किछि करंट आसीबो a path रे आसीबो राइट. ठीक अछि. And now एबे कोन हबो ना जो करंट जो डिवाइड हेतला, फॉर एग्जांपल दिस इज I1, एडा मनर I1 and एडा मनर I2 and ए जो अच्छी करंट आउडे कोडा दिस करंट ए जो करंट दिस सपोज I3. सो ऑब्वियसली I1 ए पॉइंट देखो ए पॉइंट रे मनर मो पॉइंट नेबी ई नेबी पॉइंट ई रे पॉइंट ई को I1 आसुची I2 भी आसी जेडा कोडा दिस करंट ए करंट भी आसी ना नहीं. सब एडा I2 कहबानी एडा हम कहबा कोन ए जो 7 ओम रे करंट अछि 7 ओम रे जो करंट अछि से करंट हमर I2 हबो कि I2 हबो नहीं I2 डा तो एडा. सो ए करंट आसी रे किछि करंट डिवाइडर I3 रे आउ किछि करंट मनर एडा दिस I4. ओके सपोज I4. सो एबे जो हमर पॉइंट ई रे जो करंट उडा को मीट करिवो को करंट मीट करा देखो I1. ओके I1 आसी and I3 is also
and I4. So सब जा करंट ऐड अगेन कोन टोटल करंट I ही है जो काइना टोटल करंट डिवाइड हेतला ठीक अछि. So it is clear that I4 जोड़ा रहला मु डायग्राम माने जो कलर टा लिखे दोछि एटा जोड़ा रहितला ए जो करंट जहा एडी फ्लो हो 7 ओम रे जहा भी 7 ओम रे करंट फ्लो हो सेम करंट विल फ्लो इन दिस 1 ओम रजिस्टर आल्सो जोड़ा 7 ओम रे फ्लो हो सेम 7 ओम रा ए 1 ओम रे भी फ्लो हो. So that means 7 and 1 are in series and series रे हमें कोन करी एडिशन करबा. So 7 plus 1 8. So a total resistance of value a resistance the value केते हिला that is 7 plus 1 8 ohm. So 8 ohm हिला. Now एडी हमें ए जो रेजिस्टर टा हमें एडू रिमूव करी हमें गोटे सिंगल रेजिस्टर हमें कहि परिबा जार वैल्यू केते जार वैल्यू होची 8 ohm. Now ए जगह देखो कोन है this 8 ohm okay this 8 ohm and this 8 ohm ए दीडा पॉइंट रे कनेक्ट अछि. सो दिस 2 पॉइंट एवडा अछि. सो एवडा रजिस्टर लागि छिंदी एडा रजिस्टर 8 ohm आउट रजिस्टर एवडा कनेक्ट है छिना नै. सो एवडा इन अछि. So that means these two resistors are in parallel. So 8 parallel 8. So 8 R1 into R2 by R1 plus R2. दीडा रजिस्टर पैरेलल थिले मु कहि ऑलरेडी R1 into R2 by R1 plus R2. So 8 into 8 by 8 plus 8 16. So 8 रे 2 2 रे केते 4. So 8 एती टोटल रेजिस्टेंस रा वैल्यू केते हिला 4 ओम हिला. ना मुझे सर्किट टा रीड ड्रा करबी से एडा किछि रीड ड्रा मु करि परबी. एंड ए जो सब रेजिस्टर गुडा को जहां में नैथले सेडा रेजिस्टर गुडा को वैल्यू केते हिला 4 ओम हिला. ना जहां प्रीवियसली जहां ऑलरेडी कनेक्ट ला सेडा हम नै दिबा जहां अछि 8 एडा केते एडा 12 एडा 2. नाउ अगेन देखि पारियो these two resistor are in series. So 8 plus 4 is केते 12 8 plus 4 12 मिसे देलो केते ला 12 हिला. सो टोटल ए जो रेजिस्टर रा वैल्यू एडी केते हिला 12 ओम हिला. नाउ अगेन देखो केयरफुली. So this 12 and this 12 are in parallel. 12 12 parallel same जदि थिबा अधा हे जिवो 12 12 parallel हला 12 by 2 6 हे जिवो. ए देखि पाला 8 8 parallel थिला केते 4 हिला. सेम जदि अछि दिला रजिस्टर ताको जदि हमें डिवाइड माने यूज करिया सेडा अधा हे जिवो काइना R1 into R2 by R1 plus R2. So same मनर अछि. So R1 into R2 by R1 plus R2 R1 R2 same अछि R मनर अछि. So R into R okay R into R into R by R plus R2 R कोटिला R by 2 अधा हेला बुझि पाला ना. सो दीडा रजिस्टर थिले अधा हे जिवो. सो 12 12 पैरेलल कल केते हो 4 हे जिवो ए सॉरी 6 हे जिवो. सो 12 12 पैरेलल कल एडा वैल्यू केते हिला this value becomes 6 ohm. 6 ohm. Now it is clear that these three resistors are in series कहने same current change होगा क्या अब नहीं 12 plus 6 18 18 plus 2 20. So 20 ohm is the correct answer. Total resistance कितने 20 ohm होगा. So these are three questions. Next question. So find V1 V2 and V3 in the circuit. So circuit रे voltage पचाची V1 V2 V3. So एडी voltage केते हबो from your Ohm's law I into R. So I केते देनी suppose मनरा में नहीं जिबा current मनरा एडी flow होचे I ampere flow होचे देउची माने suppose I नहीं जिबा. In that case V1 will be resistance into current 2 into I and V2 will be 4 into I resistor into current and V3 will be 6 into I. So ये जगह रे तमु प्रॉब्लम रे बच्चा छिए V1 V2 V3 केते that means 2I 4I and 6I रो वैल्यू केते obviously हमु जदी I रो वैल्यू जणा पड़ जीवो इजीली हमें 2I 4I 6I कैलकुलेट करि परिबा. नाउ from your Ohm's law we can calculate I which is equal to V by resistance. So instead of single resistor and multiple resistor छी हमें R equivalent लिखिबा I equal V by R equivalent. V कहते 24 वोल्टेज देइछि ऑलरेडी टोटल वोल्टेज by रेजिस्टेंस कहते तीन जगह सीरीज रछि. सो R1 plus R2 plus R3 मिसेबा 4 2 6 6 plus 6 12.
24/12 इक्वल 2 एम्पियर सो करंट आसीगला ये तुम के 2 एम्पियर करंट जो 2 एम्पियर आसला ना इजिली आम वोल्टेज तीन टा जाक इजिली कैलकुलेट करि परिबा सो वोल्टेज आम इजिली कैलकुलेट करवा 2 into I 2 into 2 केते हबो ना 4 वोल्टेज सिमिलरली हियर 4 into 2 केते 8 voltage and here also 6 into 2 equal to 12 voltage now V1 4 plus 8 केते 8 4 12 12 plus 12 केते 24 टोटल वोल्टेज से इक्वल हला ना नहीं एडा के तमर कोन गइतला केवीएल किचस वोल्टेज लॉ भी एडी हमें यूज करि परिया देखो इन दैट केस ए जगह हमें स्टार्ट करछि मनर मोडी सो 24 ओके 24 माइनस एडी वोल्टेज ड्रॉप केते वोल्टेज ड्रॉप 2 into I सो 2 into I एडी वोल्टेज ड्रॉप केते माइनस 4 into I एडी वोल्टेज ड्रॉप केते माइनस 6 into I इक्वल टू 0 एडा केवीएल ना अलजेब्रा सम ऑल द वोल्टेज इज इक्वल 0 सो दिस केवीएल सो आपको सॉल्यूशन कले इजीली आसीबो 2I minus 4I minus 6I केते 6 4 10 10 2 12 सो माइनस 12I इक्वल टू 24 टा सेपट गले माइनस 24 सो 12I इक्वल 24 I इक्वल 24 बाय 12 इक्वल 2 एम्पियर सिमिलरली एबला तमे करंट कैलकुलेट करि परिबा नाउ 2I 4I 6I I आसला पर 2I 4I 6I इजीली कैलकुलेट करि परिबा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन find the current I1 and I2 in the circuit so total current is 2 ampere and I1 and I2 रे current divide हो जाउची so easily we can use current division rule that is total current so I1 equal to केता हो ना total current into opposite resistance for I1 the opposite resistance is this one 1 ohm so total current into opposite resistance by total resistance 2 plus 1 टोटल रेजिस्टेंस मीनिंग कोन ना जो दिडा पाथ रे करंट डिवाइड होची से दिडा पाथ रो रेजिस्टेंस डा को एडिशन करबो सो दिस इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर 2/3 एम्पियर सिमिलरली I2 will be similarly I2 equal to total current केते 2 into opposite resistance for I2 the opposite resistance is 2 ohm so 2 into 2 by total resistance 2 plus 1 3 2 plus 1 so this is equal to 2 into 2 4 4/3 ampere now we can verify whether this answer is correct or not एटा हमें वेरीफाई भी करि परबा आंसर ता हमर ठीक अछि ने नाही काइना टोटल करंट केते 2 एम्पियर एटा डिवाइड हेछि केते I1 I2 रे सो जतलो I1 I2 एडिशन करबा सेटा 2 आसिया कथा सो आछि ना आम चेक करबा एदिला करंट को एडिशन करले हमर आंसर केते आसे देखि परबा सो 2/3 प्लस 4/3 एलसीएम केते 3 ऊपर केते हबो 2 प्लस 4 इक्वल 6/3 इक्वल 2 so that means our answer is absolutely correct okay so next question number 6 okay देखो find the current I passing through and the voltage across each of the resistor in the circuit so previous question ଆଉ ए क्वेश्चन भितर किछि भी डिफरेंट नाही टोटल करंट पचाची एंड इंडिविजुअल वोल्टेज पचाची V1 V2 V3 so previous question a question exactly same so try to solve it yourself निजे ट्राई करो सॉल्यूशन करिया पई so previous question ना अगेन देखि परबा ताको ता हिसाब रे समय सॉल्यूशन करि परिबा ओके जदी सॉल्यूशन करि पाना देन पचारियो डाउट पचारियो मु डिस्कशन कर देबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो find the current I passing through and the current passing through each of the resistors in the circuit below so total current केते आ इंडिविजुअल करंट उडा को केते से कैलकुलेट करिया को कहिछि इंडिविजुअल करंट उडा केते आ टोटल करंट डिवाइड्स इनटू I1 I2 I3 so total current केते आ इंडिविजुअल करंट केते ले 50 so total current equal to I equal to हम इजीली लिखि परिबा ना I1 plus I2 plus I3 सब तीनटा करंट एडिशन करले ऑब्वियसली हम करंट आसीबो टोटल करंट आसीबो सो इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट करिया पई हम पाखरे कोन अवेलेबल अछि देखिबा
So 0.1234, 0.1, okay, 1 to 8, 2 to 7, 3 to 6, 4 to 7. All these points are connected to this 9 voltage only. So that means voltage remains same. These are parallel connection. Parallel connection re voltage same rahiba. Throughout the circuit, throughout the resistor, all the resistor across re voltage same. If the voltage same, easily we can calculate current. So I1 equal to voltage by resistance R1 plus I2 equal to voltage by resistance put R2 and I3 equal to voltage by resistance R3. So calculation kala kete total voltage kete 9 by resistance R1 kete 10 kilo. So 10 kilo. Okay. Plus 2 by, sorry, 2 by goes. Again 9 by kete 2 kilo. 2 kilo kilo 2000 kilo kilo 1000 plus V 3. Okay, এটা 9 है. Similarly V3 টা কেতে V3 তো সেম 9 ভোল্টেজ 9 by R3 কেতে 1 কিলো ଅଛି so by 1000 so এটাକୁ সলিউশন কলে আমার आंसर আসিবা. Okay, so this is equal to easily ଆମେ ଏଟାକୁ solve କରିପାରିବା no problem. Okay, so आपको हमें सॉल्यूशन जदि करवा 9 by 10 अच्छी. So this is 0.9 into जो एटा को हमें कौन करिया 9 by 10 को मु लिखि पारे 0.9 9 by 10 को 0.9 लिखिबे एंड एटा जदि ऊपर नेबे मु एटा लिखि 10 to the power -3 10 to the power -3 माने 10 to -3 बुझि पारछो प्लस सिमिलरली एटा हमें लिखि पारिबा. ओके 9 by एटा 2 9 by 2 कले केते 9 by 2 अछि 4 माने 9 by 2 राइट 9 by 2 कले केते आसीबो 9 by 2 equal to 4.5 बुझिला. so 4.5 into 10 to the power -3 plus 9 by केते 9 by 1000 अछि. so एडा एडा लिखि पारि हम केते एडा ऊपर नेला हम लिखि पारि 9 into 10 to the power -3 9 into 10 to the power -3. So addition करिबो 9 plus 4.5 plus 0.9 into 10 to the power 3 गले तमरा आंसर आसे राइट. मिली एम्पियर आसे मिली माने 10 to the -3 स्मॉल करंट को मिली कहउची मिली एम्पियर स्मॉल करंट. ओके okay, so similarly we can solve question number 8 number question भी easily solution करि परिबा. calculate the current supplied by two batteries in the given circuit. So I1 and I2 calculate करिया कोइ total current हमें easily calculate करि परिबा. I1 ଆଉ I2 दिडा current रे value केते होली 50 छे so हमें easily calculate करि परिबा. so before that हमें ए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दबा देन सेटा सॉल्यूशन करबा. ओके consider a 230 voltage 100 watt incandescent lamp. Determine lamp resistance, lamp current, energy 8 hour केते एनर्जी आसी होली 50 इजीली पावर देछि वोल्टेज देछि. सो रेजिस्टेंस इजीली काढी परिबा. सो पावर फार्मूला होछि P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. प्रीवियसली हमें ऑलरेडी पावर तीनटा फार्मूला बाहर करले मु कहितली सेडी जे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन वी कैन इजीली कैलकुलेट by using these formulas li कहतली. so in that case एडी जेतु वोल्टेज आ रेजिस्टेंस पावर देछि रेजिस्टेंस बाहर करि पारे इजीली. so R equal to हमरे फार्मूला रासिबो केते ना V स्क्वायर बाय P कला R आसीबो वोल्टेज केते 100 सॉरी 230. so 230 रो स्क्वायर माने केते 230 into 230 स्क्वायर माने डबल मल्टीप्लाई करिया बाय पावर केते 100. so 0 0 0 0 कैंसिल. so 23 into 23. so 23 into 23 हमर आसी 529 ओम. so रेजिस्टेंस आसीला 50 थिला देन तम 50 छे करंट 50. so एडी वोल्टेज जणा अछि
230 एंड रेजिस्टेंस जणा अछि करंट इजीली काढी परिबा सो I इक्वल टू V बाय R V केते 230 बाय रेजिस्टेंस 529 so 230 by 529 is 0.43 ampere so current भी आसीला देन से पचाची एनर्जी 8 आवर एनर्जी केते आसो एनर्जी रे फार्मूला केते ना पावर इनटू टाइम पावर केते 100 वाट इनटू एनर्जी माने घंटा टाइम केते 8 घंटा सो 100 इनटू 8 800 वाट आवर इन किलोवाट आवर यदि आमे काढिबा 1000 रे डिवाइड कर देबा 1000 रे डिवाइड करले हमर एटा आसीबो 0.8 0.8 ओके सो इजीली आमे पावर कैलकुलेट करि पारिया पावर त देछि एनर्जी कैलकुलेट करबा एनर्जी जेनि मु ऑलरेडी कहली पावर इनटू कोन टाइम पावर केते देछि 100 वाट इनटू केते 8 आवर देथला इनटू 8 बाय 1000 करबा काइना किलो रे आनिवार अछि किलोवाट आवर रे सो आकु कैंसलेशन इजीली करि पारिबा 1.5 कटला 8 बाय 10 0.8 किलोवाट आवर सो दैट मींस 0.8 यूनिट केते यूनिट रो तमरा एनर्जी 0.8 यूनिट रो एनर्जी सेटा बल्ब टा कंज्यूम करछ राइट सो देन हमें ए क्वेश्चन सॉल्यूशन करबा दिस इज लास्ट क्वेश्चन calculate the current supplied by two batteries in the circuit given below दीटा बैटरी अछि बा दीटा वोल्टेज अछि सो टोटल करंट केते आसिली से पचाछि सो इजीली एडी हम लूप पकेबा केवीएल सॉल्यूशन करबा किर्चॉफ वोल्टेज लॉ यूज करबा केवीएल सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो I1 लूप 1 रे मनर करंट हम नेले I1 and loop 2 रे करंट हम नेले I2 now for loop 1 the KVL equation will be for loop 1 KVL equation केते आसीबो क्लियरली देखो एडी पॉजिटिव अछि 9 90 so 90 प्लस रहला 90 minus in 10 ohm the voltage drop will be 10 into I1 10 into I1 10 I1 minus 80 voltage drop हो केते I into R ओके रेजिस्टर केते 25 एटा टिके केयरफुली देखो इन R3 रेजिस्टर R3 रे I1 करंट भी फ्लो होची while I2 करंट भी फ्लो होची सो दीडा करंट आछी so that's why आमे लेखिबा I1 plus I2 again these two I1 I2 रो डायरेक्शन भी सेम अछि I1 I2 डायरेक्शन सेम थिबा जो हमें I1 plus I2 लिखले this is equal to 0 आको सिंपलीफाई कर देबा so 90 minus 10 I1 minus केते 25 I1 minus 25 I2 equal to 0 further solution करले एटा हमर आसीबो केते I1 25 plus 10 minus 35 I1 minus केते minus 35 I1 minus 25 I2 minus 25 I2 minus केते 25 I2 okay and plus केते plus 90 equal to 0 so एटी जदि हमें गोटे कॉमन नहीं जा माइनस टी गोटे कॉमन नहीं नेले भी हम माइनस टी कॉमन नहीं जाली कहले मो 90 टा को राइट साइड शिफ्ट कर दउची माइनस 90 हे जीवो एंड एपट साइड रो माइनस नेगेटिव कॉमन कर देले हमर आसीबो 35 I1 प्लस 25 I2 equal to 90 so this is our equation number 1 similarly in loop 2 second loop रे in this loop second loop रे ओके second loop टारे देखि परियो से बडा केते वोल्टेज टा केते भासी देखो 125 पॉजिटिव रे भासी सो पॉजिटिव रहइबो सो 125 माइनस voltage drop in 5 ohm resistor is 5 into I2 काइना करंट एडी केते I2 करंट जाउ चेडी minus
25 again 8 देखि पारियो both I1 I2 addition हबो काइना दिडा करंट जाउची इक्वल टू केते 0 सो आपको सिंपलीफाई करबा एडा को सिंपलीफाई कला हमर आंसर आसीबो केते आई डा हम देखिया 25 आई सो 25 I1 25 I1 plus minus 5 I2 minus 25 I2 so कहते हैं 25 5 के 30 30 I2 equal to कहते 125 similar to previous equation एटा हमें solution कले so equation number 2 now solving equation number 1 and 2 by using calculator scientific calculator is allowed in exam रे भी तमु scientific calculator allow अछि so by using scientific calculator by solving it will get take care of solve करछे so आपको हम easily solution करबा using calculator otherwise you can solve by any of your method no problem okay by solving it solution कलो हमरा already answer आसला that is I1 equal to 1 ampere and I2 equal to 5 ampere so you can check whether the answer is correct or not okay by yourself निजे टिके try करो okay so एटा को solution करो similarly you can solve any type of questions so if you have any doubts or any problems regarding so you can ask me in our telegram group or in WhatsApp group thank you